अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया भर में कार्डियोवैस्कुलर मोर्टालिटी का सबसे बड़ा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? इज इट हाई कोलेस्ट्रॉल, इज इट स्मोकिंग, या फिर सीडेंटरी लाइफस्टाइल? व्हाट इज इट एग्जैक्टली? ओके, और सही आंसर अगर आप सुनेंगे तो इट इज एक्चुअली हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर। और ये आंसर शायद आपके लिए गूगली हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए भी ये गूगली था जब मैंने उसके बारे में जब स्टडी किया था। बट दिस इज अ रियल आंसर, एंड द रीजन इज बिकॉज हम लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में, स्मोकिंग के बारे में, सीडेंटरी लाइफस्टाइल के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं, लेकिन इस बीमारी के बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं। और ये एक साइलेंट डेडली किलर है, और ये इतनी कॉमन है। This is one of the major modifiable risk factor. Okay, so this is our topic of discussion today. Just to inform, my name is Dr. Prashant. I'm a pediatric surgeon practicing here in Pune. Also, I'm sort of a transformation coach, working in this field for last 10 plus years. और हम डॉक्टर्स और बिजी प्रोफेशनल्स को हेल्प करते हैं वेट लॉस के लिए, डायबिटीज रेमिशन, थायराइड रेमिशन, पीसीओएस रिवर्सल एंड सो ऑन। ये सारी बीमारियां जो है बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीजेस के ऊपर हम लोग काम करते हैं। एंड यस, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, बिकॉज अगर आप शेयर करेंगे तो किसी को हम लोग हेल्प कर सकते हैं, अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रिवेंशन के बारे में, रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम हमारे फैमिली मेंबर्स को, दोस्तों को हम लोग हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये ज़्यादा प्रचलित नहीं है, ज़्यादा लोग फॉलो नहीं करते हैं, हम मेडिसिन पे ज़्यादा करके डिपेंडेंट रहते हैं, या फिर सम शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट पे हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। बेसिकली वी आर बिजी ट्रीटिंग सिम्टम्स एंड नॉट रियली एड्रेसिंग द रूट कॉज। सो ये हम लोग रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटिंग द रूट कॉज, इसको हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं। सो विद दिस लेट्स डाइव इनटू टुडेस टॉपिक, व्हाट इज हाइपरटेंशन, which is one of the single most modifiable risk factor for cardiovascular disease, not only in India but worldwide, पूरी दुनिया में। okay, hypertension is one of the most significant risk factor. okay, और शुरुआत में टॉपिक की शुरुआत में हम लोग थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज जीबीडी डेटा के अकॉर्डिंग, ओके, जिसमें 87 रिस्क फैक्टर्स को कंसिडर किया गया था फ्रॉम 204 कंट्रीज एंड टेरिटरीज। और ये डेटा दी लैंसेट, ओके, विच इज अ प्रेस्टिजियस जर्नल, उसमें 2020 में ये पब्लिश किया गया था। और उसके स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। इसमें हमें पाया गया था कि हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स टू अप्रॉक्सीमेटली 10.8 मिलियन डेथ्स एनुअली वर्ल्ड वाइड, विच इज ह्यूज। ऑल राइट, और इंडिया में सिचुएशन और भी अलार्मिंग है। ओके, अकॉर्डिंग टू द जीबीडी, ओके, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज 2019, और इंडिया के जो स्टैट्स है आईसीएमआर, ओके, जिसमें क्रॉस सेक्शनल स्टडी वाज डन इन 15 डिफरेंट स्टेट्स in 2017. This data was published in 2017, and also according to NFHS, which is National Family Health Survey, डेटा जो है जो 2021 में पब्लिश किया था, उसके अकॉर्डिंग, ये सारे डेटा के अकॉर्डिंग, around 28 to 30% adults have hypertension. okay, and rural areas जो है उसमें कम है, approximately 25% है, but urban areas में ज्यादा है, almost like 33 to 35%। और लगभग 50% लोगों, 50% लोगों को पता भी नहीं है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है। कई लोगों को जब हार्ट अटैक आता है या फिर स्ट्रोक होता है, तब उन्हें पता चलता है कि उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम माय family, okay, a few people from my family who have been diagnosed at some problems. okay, so now why hypertension is so dangerous? ये basically एक silent killer है। okay, ज्यादा symptoms नहीं देता है ये, until and unless it becomes very significant। okay, तो पानी जब सर के ऊपर से चला जाता है तब हम इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं। बेसिकली इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज, मतलब हार्ट अटैक्स जो है, हार्ट के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक वेरी सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर, हार्ट फेलियर, सीकेडी मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज, किडनी फेल होना, एट्रियल फिब्रिलेशन एंड सो ऑन। So we have to really take this disease seriously. Inter-heart study was done across 52 countries, more than 29,000 participants। इसमें शो किया गया कि हाइपरटेंशन जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीब्यूटर है फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। हार्ट अटैक्स का सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो है वो है हाइपरटेंशन। ओके, डोंट टेक दिस लाइटली। ओके, देन देयर वाज अ स्प्रिंट ट्रायल व्हिच वाज डन इन 2015, जिसमें मोर देन 9,000 हाई रिस्क पेशेंट्स वे को इंक्लूड किया गया था, और उसमें इंटेंसिव ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया गया था बाय कीपिंग इट बिलो 120 सिस्टोलिक।
एंड स्टैंडर्ड जो थे एक कंपैरिजन ग्रुप उसमें लेस देन 140 का रखा था. सो इंटेंसिव ग्रुप जिसमें इंटेंसिव कंट्रोल किया था तो उसमें 25% रिडक्शन इन मेजर कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स वाज आइडेंटिफाइड एंड 27% रिडक्शन in all cause mortality was observed. So you see, if you control hypertension, this can give significant results. Then there were a collaboration of prospective studies. A meta-analysis was done. Okay, जिसमें almost 1 million adults include किए गए थे across 61 different studies. और हर 20 milligram of mercury, of mercury, systolic rise जो हुआ उसे cardiovascular mortality डबल हो गया. तो ब्लड प्रेशर जैसे बढ़ता गया mortality बढ़ता गया. सो इंडियन डेटा भी जो है उसमें आईसीएमआर का जो स्टडी हमने कोट किया था उसमें हाइपरटेंशन अकाउंट्स फॉर अ लार्ज proportion of stroke burden in India. So stroke majority of the times hypertension की वजह से होता है. इंडिया में stroke का incidence जो है वो rapidly increase हो रहा है and this is because of uncontrolled blood pressure. People are not taking medications, people are not getting diagnosed इसके वजह से. So all these study prove that this is a very strong, modifiable risk factor and this is a major silent killer. Now let's talk about what are the mechanisms, pathophysiology क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करेंगे. सबसे पहला, हाई ब्लड प्रेशर से एंडोथेलियल इंजुरी होता है. कांस्टेंट प्रेशर अगर हाई रहेगा तो जो हमारी नसें हैं, आर्टेरियल वॉल जो है उसके ऊपर स्ट्रेस आता है, इंजुरी होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ठीक से काम नहीं करता है. और नाइट्रिक ऑक्साइड एक वेसोडाइलेटर है. ओके, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में हेल्प करता है. सो अगर वो नहीं रहा तो ब्लड प्रेशर जो है वो नसें जो है वो हमारी स्टिफ हो जाती है. सो ज्यादा प्रेशर लगेगा अभी एंड दैट इज हाउ द ब्लड प्रेशर राइजेस. ओके, नेक्स्ट इज आर्टेरियल स्टिफनेस. अगर ये ब्लड प्रेशर जो है हाई रहा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो इन वेसल्स जो रहते हैं, ब्लड वेसल्स, उसमें कोलेजन डिपॉजिट होता है और कोलेजन जो है वो आर्टरीज को स्टिफ बनाता है. सो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो गई, स्टिफ हो गया. नाउ हार्ट हैज टू पुश फर्दर एंड the more blood pressure, more collagen deposition, more hard the arteries become. This is a vicious cycle. Next, atherosclerosis acceleration. हाई ब्लड प्रेशर जो रहता है वो एंडोथेलियल लाइनिंग, अंदर का लाइनिंग जो है उसको इंजरी करता है. वहां पे एलडीएल डिपोजिशन होता है, टिपिकली स्मॉल एलडीएल पार्टिकल्स. रिमेंबर, स्मॉल एलडीएल पार्टिकल्स आर वेरी डेंजरस कंपेयर टू फ्लफी लार्ज एलडीएल पार्टिकल्स which are not that dangerous. Okay, they do not cause major issues. So यहाँ पे जब एलडीएल डिपॉजिट होता है, प्लैक फॉर्मेशन होता है, उससे और भी जो है विड्थ वो कम हो जाती है और प्रेशर और बढ़ जाता है. नेक्स्ट, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी. हार्ट को अगेंस्ट हाई प्रेशर पंप करना पड़ रहा है. इसके वजह से हार्ट हाइपरट्रोफी हो जाता है. इवेंचुअली बेचारा हार्ट जो है वो पंप करना थक के एक्चुअली पंप करना बंद कर देता है, ठीक से पंप नहीं कर पाता है और फेलियर में चला जाता है. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन. ओके, नाउ फ्रामिंघम हार्ट स्टडी जिसमें 5000 प्लस पार्टिसिपेंट्स को शामिल किया गया था एंड दे वर फॉलोड फॉर डिकेड्स. उसमें क्लियरली ये शो किया गया कि हाई ब्लड प्रेशर वाज had a very high risk for heart failure and cardiac events. So don't take this disease lightly. All right, this has a lot of significance. अभी इसके ट्रीटमेंट जो है और थोड़ा सा प्रिवेंशन, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे. सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस डिटेल्स, मैकेनिज्म्स क्या है, तो व्हाट इज द रियल ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन. ओके, नाउ अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज दैट यू आर गोइंग टू गेट अ प्रिस्क्रिप्शन जिसके ऊपर आपके ऊपर कोई पिल लिखा रहेगा, कोई तो मेडिसिन दिया रहेगा जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाए. ओके, एंड लॉट ऑफ people get this prescriptions and they are taking these medications for years together, but the thing is that you will see that the dose is increasing. Blood pressure अगर control भी रहा, still it can give rise to heart problems, it can give rise to CKD, stroke, retinopathy and so on. All right, so to be frank, we are not really addressing the root cause, we are just treating the symptom, we are just trying to keep the blood pressure in control, but underlying pathology जो है, underlying mechanism जो उसको address नहीं किया. So what's the real treatment? Okay, and to tell you frankly, it's the usual suspect, that is our lifestyle. Now lifestyle actually is the real solution for almost every lifestyle disease. Okay, we have to understand that if lifestyle is the problem for lifestyle diseases, then lifestyle is the solution too. All right, so understand that. So let's talk about what lifestyle changes we can do. This is the first line treatment that we should give. Of course medications we can give for acute control, but ये जो है ये करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. सबसे पहला, salt intake reduce to less than 5 grams per day. This will actually reduce the sodium
consumption to less than 2000 milligrams. Okay, और ये WHO का recommendation है. Whereas American Heart Association and American College of Cardiology, they advise to take it below 1500 milligrams. But at least 2000 milligram के कम हम लोग रख सकते हैं. Weight reduction, 5 to 10% weight loss can significantly reduce blood pressure. This is very important. 150 minutes of moderate intensity exercise is very important. I have published a video on that. I'll put the link. You can watch that video. Stop smoking, another very important risk factor. Limit alcohol. Improve your sleep, very important. Manage your stress, another very important factor. Okay, so these lifestyle changes you can do, and yes, you can adapt to a dietary change which is called as DASH style, which is dietary approaches to stop hypertension, or a Mediterranean style diet. Okay, now both these diets are basically, they are low in sodium, they are high in potassium, high in magnesium, calcium, fiber, and they are also low in unhealthy saturated fats. Now I have published a separate video on Mediterranean diet, and you can watch that video. I will put the link for that video also in the description. Do watch that video. That is also another very important video. Now medications are also very important, and do take its support to begin with, and also for its prolonged control until unless you make those lifestyle changes. Okay, so latch onto the lifestyle medications along with the medications, medications, and the medicines which you can take is ACE inhibitors, angiotensin receptor blockers, calcium channel blockers, thiazide diuretics, and there are many other medications. But do use them for acute control also and for long-term control also, and start adapting lifestyle modifications alongside. Okay, now Indian guidelines recommend starting treatment if the blood pressure is more than 140/90. Okay, but yes, if you are in high risk category, then you start it even lower that. Okay, even for blood pressures lower than 140/90. Okay, so what are the practical Indian adaptation advices that you can take from this video is that in diet you can reduce pickles, पापड़ का कंजम्पशन कम कर सकते हैं, पैकेज स्नैक्स कम कर सकते हैं, अवॉइड नमकीन and salted snacks because these are high in sodium, these are high in salt, which will increase blood pressure. Increase your potassium. Potassium is there in fruits, green leafy vegetables, coconut water, and so on. Increase its intake. Reduce omega-6 and omega-3. Omega-3 is very anti-inflammatory, very important. Dal, sabzi, millets, these are very important. And yes, keep monitoring your blood pressure. Okay, if you don't monitor, you will not understand whether your BP is high or low. Okay, so in a nutshell, what is the takeaway from this? Okay, hypertension is very prevalent, it is very silent, and it is one of the most powerful modifiable risk factor, but it is also most treatable and most preventable risk factor. So इसको lightly मत लेना, आसानी से हम लोग इसको treat कर सकते हैं through BP medicines also and lifestyle modifications also. What we have to remember is that ultimately we have to work on these 4 pillars of health, which is diet, exercise, stress management, sleep management, which can really help you stay away from this silent killer and also prevent its deadly complications, which can be really expensive. Okay, just imagine the cost of people have to bear the cost of heart attacks, stroke, CKD, dialysis, eye problems. It can really drain your health, it can drain your emotions, it can drain your finances. Not only affects you but your entire family over a period of time. Immediately नहीं होगा, over a period of time हो जाएगा, over a period of decades हो जाएगा. So before we close, understand that yes, LDL is important. Okay, yes, smoking is dangerous. Definitely tackle that. Sedentary lifestyle, yes, it is 100% harmful. लेकिन ग्लोबली अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है modifiable killer risk factor is hypertension. Don't ignore it, measure it, manage it, and yes, I would highly recommend prevent it, and if required, yes, treat it also with medications as well, but do the lifestyle modifications also alongside it. So if you like this video, do share it with your friends and families. I am sure you know somebody, at least one person in your family who has high blood pressure, and they have been taking some medications. You can forward this video to them so that they can actually understand what changes they have to do, and they can start doing these changes in their diet, in their lifestyle, and this can really help. Okay, and yes, if you need any help, do fill up the health sheet which I have put up in the group, in the description of this video, and then we can connect one-on-one for your health problem. So with this, I'll end this video. Thank you very much for listening.
बाय बाय, टेक केयर।